आप अपने कैसे आप उनको गाइड करेंगे, स्टूडेंट को क्या करना होगा, उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट को बताएं। So first of all, I will start with the plan. What should be planned for the coming 3 months, 3 or 4 months for prelims? So we are having approximately 4 months, and if we study weekly one subject, and I think it is sufficient to have minimum 3 tests, 30 tests. If we consider 2 tests a week, we can solve 30 tests of any institute you like, because it will help you having the practice of the questions. So most important thing in prelims is having practice. The more number of tests you solve, the more perfection or grip you will get on the answer paper, on the question paper. So practice is the must. Secondly, we are having weekly tests. So discussion would be on the basis of how was the question framed, what should be your approach to solve the question, so that you can use that approach in your upcoming tests. Thirdly, Deepak sir also would be guiding personally. So you also can ask any of us for if you face any doubt. So that should be the focus. Regarding tests, you can have minimum 20 questions a day, and about a test on Saturday or Friday. It will cover 2 tests per week. This was about the schedule for next 4 months. We are not giving you deliberately how to solve, what to solve, because everyone is having different preparation level on different subject. Maybe someone feel easy in geography and difficult in history, and other will face different difficulties. So accordingly, you can manage your timetable and schedule. Secondly, while studying, now we'll start with the geography, which is today's subject. While studying, we should classify the questions. For example, suppose 5 to 6 questions are average on each prelims questions, 5 to 6 or 10 questions. So if we have classification of them of those previous year questions, then it would be easy for us to have a smart prediction of upcoming questions. If we consider last couple of years question paper, there were 2 or 3 conceptual questions which could be solved from the NCERTs or regular sources. But some of the questions were like, you need to go one step ahead of NCERT. For that, you need to perfect your NCERT revision 2-3 times at least. So if you read NCERT, that will cover your 2 to 3 conceptual questions. I will take an example from previous year questions. There was question of Indus River system a couple of years ago. In NCERT, they have covered the Indus River system. But the questions they have asked the tributary of Indus River system, Nubra River. Why this question was asked? Because Siachen Glacier was in news. So for these 2-3 questions, we need to have additional information, additional current affairs study. That should be second type of question. And third type of questions are purely factual. So I would advise this, as long as you don't have any perfect answer of that question, or you are confident about those type of questions, you shouldn't go for those questions, because it will consume your time. And number of questions are being asked for geography are lesser number as compared to other subjects. So you can devote that time to other subjects. This was about the analysis of previous year questions. So is anyone having any doubt in this format? Means how to analyze previous year question, what are the sources to study, what should be our upcoming schedule? So please feel free to ask. Sir, can I ask a question? Yes, ma'am. Yeah, so
for this week, we'll have geography. Will it Yes. include everything from Indian to world? Yes. Like Yes. the Yes. entire thing? Yes. Entire thing. Thank you. So the test would be based on the Prakash sir is going to conduct the test of 15 to 20 questions. That would be based on entire geography portion. In addition to that, you need to solve minimum 2 tests for this week. First test should be of the basic conceptual questions, and second test should be of advanced question. For you pick up material of any institute, you will get Yes. 2 tests for that geography. So that should be the Okay. focus. Thank you, sir. स्वरूप उनका सोर्स क्या होगा, क्या मतलब क्या इनको स्टडी करना होगा इस पूरे वीक में? सर इस वीक में स्टडी करने के लिए सिर्फ 11th और 12th एनसीईआरटी 11th or 12th LCRT is sufficient, because if you try to go for additional sources, looking at the limited time, it won't be feasible, because the number of questions are being asked which are less for geography. That time we can devote for polity, economy, and environment. Okay. And in any way, majority of environment portion covers geography basic concept. If you know the basic concepts of geography will help us in environment, ecology, agriculture, even in international relation questions. Even in international relation questions, if we are perfect with our geography, then, for example, the river based questions, they are coming from international relation as well as geography. So interlinking geography with other subjects will help us to eliminate at least 1 or 2 options. So though number of questions which are asked in geography are lesser in number, it will help you in other areas as well. So I'm going to discuss about the subjects and the sources to study. For physical geography, NCERT class 11 textbook, that is sufficient. If anyone needs an extra conceptual clarity, he or she can go for the GC Leong, but I don't think so. One should go for GC Leong unless and until we are done with the minimum 3 revisions of physical geography of NCERT, because GC Leong is not made for UPSC preparation. It has altogether different purpose. So if one wants additional conceptual clarity, then one should go for NCERT. But for physical geography, class 11th NCERT, that too selective reading. So the unit 3 climate, unit 4 climate, unit 5 ocean, and geomorphology. These 3 are important units one should focus while reading 11th NCERT. Then we go for Indian geography portion. For that, one should have the multiple readings of class 11 NCERT, that is Indian geography. Plus, we have to update ourselves with the current, because though the question seems to coming from NCERT, to have the confidence on that level. For example, on river question, on the climate question, on the question of flora and fauna, NCERT doesn't cover everything, but it builds a base for your current affairs. So current affairs is next step. One should have a revision of NCERT, then we should go for current affairs. And for Sir, world, okay. Sorry to disturb you, sir. So I wanted to ask, what about mapping? Will we have a separate session on mapping, or will it be included in this geography week itself? Okay. So regarding mapping, I don't think so that apart from NCERT, we should go for additional mapping. Okay. We need to do additional mapping, but that should be covered from current affairs. Okay. For example, which interstate river dispute are in news? Okay. India having conflict with its neighbors. For example, Siachen. There was question of Tista River.
There can be question on Brahmaputra River. So these are current affairs. Current affairs of international relation, we can link with geography mapping. So that should be the base. Secondly, in world geography, we can have the current affairs linked mapping sessions where currently Ukraine crisis is in news. Previously, there were questions on Mediterranean Sea, Red Sea, Caspian Sea. So based on these events, while reading the current affairs, we should do mapping. We shouldn't have any additional session because it will divert ourselves. There are sessions, there are multiple sources available in market regarding mapping. But if we interlink that with current affairs, it will help us to retain that information. Because in only mapping session, you are reading only text of that mapping. It is in news. What is the purpose? But if you read it with current affairs or any other development, it will also help you understand context of that mapping, the importance of that mapping. So that should be the focus of mapping. We shouldn't have any separate session. If you can have any doubts, you can always ask us regarding mapping, but current affairs should be linked with mapping. That is my concept of mapping. Okay, got it. Thank you. So any additional doubts regarding what should be covered, from where it should be covered? One more addition that I want to give to the students, like please look at the previous year questions. For example, if you are studying this in this week the geography, then on Saturday or Friday just go through the what are the questions asked by UPSC in geography. So one more thing regarding previous year questions. I think that reading previous year questions while reading that particular topic would help us to have directed study, because there are many more stuff given in geography, physical geography. For example, type of stones, type of those things are rarely asked. But while revising the geography question, you can have the reading of previous year question. Based on that, one should try to predict the questions. Means one should try to, then only one can understand the depth of questions that UPSC asks. So reading the previous year questions along with your syllabus is important. Right. Is everyone clear with what to study, when to study, and what are the sources? Yes, sir. So one more questions that previous year question, and every students, every teacher, every candidate analyzes those questions from different point of view. So my advice would be you yourself analyze those questions. So it will help you in understanding the depth of question. I am again and again focusing on the word depth because if we look at the questions, then those are concept based or fact based, whatever it may be. But one question involves 3 or 4 concepts or 3 or 4 facts. Unless and until you know those 3 or 4 concepts, you won't be able to solve those questions. So you yourself analyze the questions, go for your standard material, see from where the question has come, see the section from which question has come, and try to frame the question, same kind of question, from another section of your syllabus. For example, this year there was question on ocean. Last year there question on climate. This year may be the question of geomorphology. So if you try to frame the question, then you do not only study that subject,
but you understand that concept, you apply that concept, and it will help you to, and it will not, it won't be any boring boring exercise. So that should be the approach. Daily 1 or 2 questions are sufficient in this approach. Means you analyze previous year questions, link it with your concept, link it with your current, link it with another subject, for example IR, polity, agriculture, and then solve it. It becomes an interesting exercise. That's the purpose of asking to do this exercise. So as everyone clear with the schedule of next 4 months, so the more number of tests you solve, no matter how many questions you get wrong, the solving the test is important in my view. Because if you see in the final paper, in last year's paper, the question was same for the student who has prepared for a month and the student who's preparing for 4 to 5 months. The thing which mattered at last moment was the confidence and the technique called elimination technique. These two things mattered a lot in last year's prelims examination, because type of questions were very different. So practice is important. So while solving this 30 tests, one should have test-wise analysis of own performance. Suppose you have solved one test on the Saturday, on the coming Saturday. On the same day, you need to analyze the newspaper, read the question paper, read the answer keys. After that, you should check your performance. While checking your performance, you should classify your number of questions. Suppose out of 100 questions, one is able to correct 30 questions based on concept. 20 concept, in the 20 questions, one was able to eliminate 2 options and try to guess from other 2 options. That comes out to be 50% probability. One should definitely go for this kind of questions in final prelims, because here the probability of question getting right is more. So if one is able to eliminate 2 options, then you should definitely go for it. And third type of questions are where you are able to eliminate only one option, or some of the questions are like you don't know the basics of the questions, you don't know the facts of the questions, but based on your we can say you have read it somewhere. You have read it somewhere while reading current affairs, NCERT, or any other standard material, but you are unable to come at the definite answer, because answer is there in your subconscious mind. You have strong guess that this can be the answer, but you should go for such kind of questions only in the you should keep these questions at last. So these are having lesser probability of getting right. And there are some questions which you need not to solve, because if you consider the cutoff, it is currently about 90 to 100. So you don't need to solve all the 100 questions. If you are having the attempt in between 80 to 90, it's okay, because prelims score is not considered in final ranking. So you solve the bare minimum 80 to 90 questions, out of which 40 would be concept based, for which you are having definite answer. 20 to 25 would be the questions which you will be solving with the elimination technique, and remaining questions would be guesswork. But why I am telling you to have self-analysis, because every person may have different number of questions right. Every person may have different approach. Every person may have different strong points based on your studies. So you need to have self-analysis. For that, you can have your separate register in which you can note down your performance test-wise, and then over the period of time you will see that your performance is gradually
getting better and better. The more number of tests you solve, the more number of right questions are there. So this is about geography. So if you are having any additional doubts regarding how to approach for the examination, how should be the approach for exam? Anyone can ask any doubts for geography or any other subject. Sir, can you provide the previous year papers? Because it's a little bit difficult to search and download. If you have, If you want in digital format or in hard copy? sir, in digital form, PDF. We'll send you the links where the previous questions are analyzed. One should be ready with minimum 10 years of previous year questions. We'll send you the links. And sir, NCRT is sufficient for mains also? Yes, for mains NCRTs are sufficient, but one should also read the current affairs. Unless and until you have geography optional, NCRT is sufficient. For mains, if one is having geography optional, then he should go for additional material. But for other people, NCRT is sufficient to tackle the questions of geography. Because in mains, the questions are asked integratively. So the geography questions are being asked in disaster management. Disaster management questions are being asked in geography, environment. So these three topics are to be studied for mains. And according to that, one should have strategy for mains. And sir, which test series is best? There are multiple sources in market, but if you consider then Vision test series or Insight test series are good ones, considering the difficulty level. Especially if you consider the Vision test series, firstly they are having a basic level test, then they are having advanced and difficult level test. So it gradually builds up your concepts. So these are some good ones. Yes. So I would advise everyone to prepare their weekly, monthly, and daily plan for studying. Because we also can give you plans, what to study, which subject to study on which day. But it is difficult to gauge everyone's strengths. Everyone may having difficulty in different area. One may be feeling comfortable in geography, like I said earlier. One may have confidence in politics. Based on that, one should have own planning, the schedule of test. Any additional doubt? Please ask doubts, because what is difference between the other initiatives and this one is having to have a customized plan for everyone. So feel free to ask. Even after this session, you can ask us doubt. That is no issue. We are available 24/7. You can text us anytime based on your specific query, and it will be helpful. Thank you, sir.
So I want to know that any additional guidance one requires regarding study material. If one have any additional expectation that you want any additional study material or need any further focus study or previous year question analysis, so that also can be done. So I think previous year question analysis could help me because for me giving more than 5 to 6 hours in a day is a little challenging. So as you said, to analyze, every day and all, sometimes if work is there a lot, I am mentally exhausted. I cannot put in the required efforts. So if I get some material like that, I think it'll be really helpful to me. okay, we'll do that. We'll do that. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Sir, till now I have not read any current affair and all. So how can I cover within these 3 months and link it with the geography? So first of all, you need to cover NCRTs. This is the basic. For example, additional budget has given the proposal for linking having 4 river linking projects. For that, one needs to be clear about the location of existing rivers. After that, you can for standard material for any class, any institution. Into that, if we come across any other such additional material or additional news, current affairs news, which can be asked in UPSC, then we'll provide it to you. Which will be most probable questions based on previous year questions that we will provide you. Okay, sir. So for current affair, what should be? But regarding current affairs, we should do bare minimum, which is everyone is doing. If questions comes from that area, we should be able to solve. So you are having the compilation of current affairs of many institutions in market. Maybe Vision, Insights, and Rouse Eyes. There are many good sources in market. So you can pick up any of that. Thank you, sir. One more suggestion I would like to add in all this discussion, that after having the test, after solving the test, one should make the short note of that test. In the sense, it was difficult for one to have solved the 10 questions, or you got 10 questions wrong. Then you should prepare the short notes of those questions so that you can revise those 10 questions only in a month of last month of the examination. The key to have confidence in prelims is one should revise the whole portion. For example, the exam is in June. One should be able to revise the whole portion in May itself for every subject from NCRT to current affairs. I'm not saying that you should revise each and every topic, each and every concept, each and every fact from these sources. But while studying from these sources, currently you should, or the facts which are difficult to remember, or the concepts where the number of questions getting wrong by you are more in number. So one should have short note of such questions. It will help us in gaining additional confidence, because if you are feeling uncomfortable with any concept or any fact, and if you revise it immediately before exam, it will give you confidence. Even if that question is not asked in exam,
the question may not be asked. There may be no relevance of that fact with the prelims examination, but the confidence you get means I have revised all the material, I have done with my basic preparation, and now the solving those questions should be based on that concepts only. So the additional confidence of those revision is helpful in examination. So how many of you are having first attempts at prelims? Okay. So for person having first attempt, I would advise to go for basic conceptual clarity first. Don't run too much after current affairs because it will consume your time unnecessarily. It needs to be studied selectively, and for that you need to have the grip over the basic syllabus. So instead of running after current affairs, one should be ready with your basics. For example, if you solve the questions from economy, polity, and geography, which are conceptual ones, these questions are itself comes out to be 30 to 35. So instead of running after the current affairs material available in market, be conceptually clear with the basics. That would be my advice. Sir, will we have CSAT also? I mean, any test or sessions on CSAT, because CSAT is very challenging right now with reading comprehension being more subjective. If you people want, then we can have the session on CSAT as well, from where to study, how to study. I think if one is able to solve previous year's question for CSAT, not for comprehension, only from the mathematics part. If one solves the questions and method of CSAT, method of questions, the formula for those questions, the concept behind those questions, it would be solvable in final exam. So if you want, we can have a session on CSAT as well. Okay. Okay, sir. सर्वेश आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा हिंदी में अनकंफर्टेबल। ठीक है सर। सर्वेश समझ नहीं आ रहा आपके, रिपीट करें प्लीज। सर मैं थोड़ा हिंदी के लिए बोलना चाह रहा था। जी बोलिए। सर सर्वेश ठीक है, हम हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं। जी ओके सर, ठीक है। थैंक यू। आपको कुछ डाउट था तो आप पूछ सकते हैं अभी। कुछ नहीं सर, बहस समझ आ रहा है लेकिन हिंदी में कुछ कंफर्टेबल हुआ। ठीक है, क्योंकि 2-3 इंग्लिश कन्वर्सेशन दे मे बी कंफर्टेबल इन हिंदी और नॉट, बट वी कैन बी बाइलिंगुअल, नो इशू। ओके। आपको अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कैसे पढ़ना चाहिए। ओके सर। Sir, if I go with the previous analysis instead of reading NCERT because of less time, so how it will relevant or not? Ma'am, if you go for previous year questions only, you won't be able to cover entire syllabus. So that would be issue. There is no guarantee that last year they have asked the questions on climate and this year they are going to ask the questions on climate. So you should have 1 or 2 reading of basic syllabus, and then after one can go for previous year questions. So only free, that's free to qualify हो जाएगा।
मैम वैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर प्री तो क्वालिफाई हो गए तो मेंस का रह जाएगा, और मेंस कैन नॉट, मेंस 3 मंथ में कवर नहीं होता मेंस, एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज देयर यू नीड टू स्टडी, ऑप्शनल भी स्टडी करना है, ऐसे भी स्टडी करना है, 4 जीएस भी स्टडी करने हैं। तो मेरा ये एडवाइस था कि आप मेंस के लिए, अभी आप ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हो तो ज्योग्राफी प्री के भी क्वेश्चंस देखो, और आज अगर आपने क्लाइमेट स्टडी किया और क्लाइमेटोलॉजी स्टडी किया तो शाम को प्री के क्वेश्चन देखने के बाद मेंस का 1-2 क्वेश्चन देखो कि क्लाइमेट पे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि यही प्री में मेंस में यूज होता है नॉलेज प्री का, एज पर माय एक्सपीरियंस, सो दैट वुड बी हेल्पफुल इन मेंस। सर मीन्स तो इस बार नहीं क्लियर होने से रहा, तो इसीलिए पूछ रही हूँ, प्री तो क्लियर हो जाएगा। तो वैसे तो डिफिकल्ट है मैम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जाएगी, वो लिमिटेड रहेगी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटीग्रेटेड की, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लाइमेट का क्वेश्चन ओशिनोग्राफी से, और ओशिनोग्राफी का क्वेश्चन मैपिंग से। सो if you can do integrated study, then only one is able to solve the pre questions as well, because many students or faculties have given the feedback about previous year question that in 2021 attempt it was not actually 100 marks question paper, but there were 300 questions integrated in, compressed in 100 questions. So इंटीग्रेटेड स्टडी इम्पोर्टेंट है, तो पहले सिलेबस कवर होना चाहिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके नहीं होगा। Excuse me, sir. Yes. So I wanted to ask that I have been practicing answer writing. So can I get my answers evaluated by you? Sometime? We can have such session after prelims, but currently no, like just maybe 1 or 2, so that I have an idea that I'm going on the right path. We'll discuss and we'll get you back. अर्पिता, मैं तीनों फैकल्टी के साथ डिस्कस करता हूँ, सर के साथ, और हम आपको बता देंगे उसके बारे में। Arpita, we can settle it after the class. Okay? Hello? We can discuss it personally and we can make some arrangements. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमरीश सर आपकी आवाज नहीं आ रही। I suppose there is a problem of network and poor network connection. Sir, you're not audible. Okay. It might be because of poor internet connection. You kindly keep carry on. Yes, sir. आपकी मुझे लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है इधर। आप लोग अपना डिस्कशन जारी रखिए। आवाज नहीं आ रही। ओके। हेलो। You can carry on your discussion, please. Please carry on your discussion. Okay, sir. Okay. So, Abhishek, Aishwarya, Shashank, Sarvesh, please ask doubt about your specific difficulties. I had because a the doubt purpose about of having this
purpose of having this session is to have the individual consultation. Sir, I had a doubt about the test series and interlinking of subjects and concepts. So I think they are cleared in the discussion. Okay. So the key for geography, so people mostly ignore geography because less number of questions are asked in geography. That is the approach of some students that I have observed in last year. But if you do geography, it will help you to eliminate options in environment ecology as well. So don't ignore geography. And the number of books you need to study are also less in number. You need to study only 2 books for having the base of geography, which can be covered in 4 days. So geography is important, as well as in mains you are having about 50 to 100 mark based on the integration of question they do. 50 to 100 marks devoted to geography only. So any specific question about what to study for other subjects? Is everyone clear with the book list? Sir must be sir must have be forwarded you the book list Yes, for yes, other yes. subjects. We have forwarded the book list to everybody. So is anyone having doubt in other subjects for book list? So could you send us the PDF? I mean, whoever needs whatever PDF, can we get the links to download or just PDF versions? Ma'am, for whichever subject the PDFs are available, we'll send it on the group. Okay. But the subjects for which PDF are not available, you need to Okay. purchase it. So Okay. because we are also having difficulties in getting PDF of some subjects. Okay. Whatever is available to us, we can send it on the over the group, on Telegram Okay. group. Okay. That will be great. Excuse me, sir, okay if we have referred to a different source than the mentioned? For example, can you please elaborate the subject? Like I had taken coaching, so I have my coaching notes for economics. So I have not referred to Mrinal's. So is that okay if I don't refer them? Like I have my own notes. If you are able to solve the previous year questions from those notes, it is okay. It's okay. Okay, then it's okay. If you are able to solve the previous year questions from whatever notes you are referring, yes, that would be sir. Classes. I will be having labs at this time from tomorrow. So I was concerned that I could have missed. I may miss classes. नहीं, ये इनिशिएटिव का पर्पस है इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग एंड नॉट कि आपको क्लासेस लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी कोई डाउट्स आता है या स्ट्रेटेजी में डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कभी भी. इस क्लास का हम लोग स्वरूप जस्ट आई वांट टू से समथिंग, हम लोग इस क्लास का जो वीडियो है इसका लिंक दे देंगे सभी स्टूडेंट्स को. तो अगर किसी का कुछ छूटा हुआ है इसका डिस्कशन, दे कैन गो थ्रू द वीडियो एंड दे विल गेट टू नो अबाउट द डिस्कशन. Thank you, sir. Yes. That will be helpful. And one more thing, so our task is for this week is to study physical geography and Indian geography, class 11 yes, NCERT. Yes. I will request you. Indian geography. Okay, that's it. May I know your introduction, please? Who is asking the question? Hello. This is me, Shashank Kashyap. Shashank. Okay, I suppose you have entered in the. Am I audible, sir? Okay. Yes. Go on. Yes. शशांक, मैं एक बार और रिपीट करता हूं. आपका इस वीक का फोकस रहेगा कवरिंग योर ज्योग्राफी बेसिक सिलेबस, और वो सिलेबस कवर करते करते आपको बेसिक टेस्ट सॉल्व करना है. कौन से भी इंस्टीट्यूट का बेसिक टेस्ट जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, वो गॉजिंग वो टेस्ट करेगा. सेकेंडली, और सैटरडे और फ्राइडे
आपको एडवांस टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2 टेस्ट सॉल्व करने के बाद आप ये 2 टेस्ट सॉल्व करने प्रकाश सर आपको एक पीडीएफ देंगे और टेस्ट 15 और 20 क्वेश्चन की टेस्ट रहेंगी। उस टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच रहना चाहिए और उस फीडबैक पे आप अपना अप्रोच रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फर्स्ट 2 टेस्ट में कोई डिफिकल्टी रही होगी सॉल्व करते टाइप, या आपको एलिमिनेशन टेक्निक पता नहीं है कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन, और some of the techniques like even if you don't know the answer of the question you can come at the right answer. So ऐसे में डिस्कशन होगा वो प्रकाश सर के टेस्ट का। so इसका प्री रिक्विजिट है आपने वो 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इससे पहले, तभी आपको जाके डाउट्स आएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप फीडबैक देने के लिए भी रेडी होगे। आपका स्पेसिफिक जो डिमांड है, सपोज आपको ज्योग्राफी के किस सेक्शन में डिफिकल्टी फेस कर रहे, तो उसके लिए मटेरियल, उसका गाइडेंस, तो वो बाद में हो पाएगा जब आप बेसिक्स कवर करोगे इस वीक में। सो दैट शुड बी द फोकस ऑफ फर्स्ट वीक। थैंक यू सर। सर्वेश, आपको कोई डाउट था? नो सर। आपको क्लियर हुआ है अभी तक का सारा डिस्कशन? जी सर। ठीक है, तो ज्योग्राफी के मैपिंग का मैं ग्रुप पर जैसे जैसे मुझे मिलता जाता है करंट अफेयर्स रिलेटेड मैपिंग, तो मैं ग्रुप पे पोस्ट करता जाऊंगा, या फिर मैं कंसेप्ट या कोई तो जो करंट में न्यूज में है मैपिंग वाला बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करता जाऊंगा। उसका हो जाएगा इधर। अगर उस एरिया से कोई क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मिस नहीं होगा। ओके, दीपक। यस सर। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैसे इसको क्या आप बच्चों से स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे आप टेकअप करेंगे अपना रोल इनके साथ में? यस सर। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स का वो एक इस प्रोग्राम की एक ओवरलाइन जो है ओवर आर्किंग जो थीम है वो मैं बता देता हूँ कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। आप सभी जो 10 स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी 10-15 सभी के सभी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएंगे, और उसमें प्रकाश आपके टेस्ट को देखेंगे, आपके वीकली टेस्ट होगा, और कैसे जो आप जो 100 क्वेश्चंस वाले टेस्ट जो आप घर पे कर रहे हैं उसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना घर पे इजी होता है, यूपीएससी में बैठकर डिफिकल्ट होता है वहाँ। तो प्रकाश आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे, स्वरूप आपको गाइडेंस के बारे में बताएंगे ओवरऑल, कि जो भी वीकली जो सब्जेक्ट चलेगा उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, और जैसे कि स्वरूप ने इतना लंबा डिस्कशन लिया है और यही आप वीकली सब्जेक्ट का शेड्यूल आपके पास में है और वो स्वरूप देखेंगे। मेरा रोल यहाँ पर ये रहेगा कि आप जो भी आपके जो डाउट्स हैं तो वो तो आप पूछ ही सकते हैं, नो डाउट, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के हिसाब से, और कैसे मार्क्स और एक्स्ट्रा फेच किए जाएं। प्रीलिम्स के अलावा भी आप मुझसे कैसे मेंस की स्टडी, अगर आप जैसे अर्पिता ने बताया कि शी इज इंटरेस्टेड इन सम मेंस प्रिपरेशन आल्सो, तो आपको कैसे अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कैसे आपको मेंस का अप्रोच करना है, दैट आई कैन हेल्प। ऑप्शनल क्या है आपके और कैसे अप्रोच करना है, दैट आई कैन हेल्प। आपके और कोई इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, लाइक बॉडी की फिजिकल कैपेबिलिटी होती है, बैक पेन होने लगता है या नेक पेन होता है, सो उस चीज में भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ जानना है और कैसे आपकी जर्नी कम चल रही है और कैसे उस जर्नी को और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, उस चीज के बारे में मैं हेल्प कर सकता हूँ। द पॉइंट इज कि आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एनी अबाउट एनी प्रॉब्लम अदर देन प्रीलिम्स ऑल्सो। सो प्रीलिम्स के लिए तो मैं हूँ अवेलेबल, नो डाउट, और प्रीलिम्स के अलावा भी आप कोई भी इश्यू फ्रॉम A to Z यू कैन डिस्कस विद मी। अब मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में जो स्वरूप ने काफी डिटेल में बता दिया है, बस मैं थोड़ा सा टच करूंगा कि आप सब्जेक्ट की ग्रुपिंग करके पढ़िए।
ग्रुपिंग कैसे है, जैसे देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी को एक साथ पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है 1947 तक, लेकिन 47 के बाद में आजाद हो गए तो पॉलिटी बन गई, पॉलिटी का सब्जेक्ट बन गया, संविधान बन गया अपना। तो जब संविधान कहाँ से आया, 1935 के एक्ट से आया, तो 1935 का एक जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं लगते हाथ ही उसको पॉलिटी में भी पढ़िए, संविधान के आर्टिकल्स पढ़िए। ऐसे ग्रुपिंग होगी सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री का पॉलिटी के साथ में, इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर के साथ में। न्यूज़पेपर जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप उसने देखा है बजट की न्यूज आ गई है और बजट में ये चेंजेस आ गए हैं, तो इकोनॉमी में आप देखेंगे कैपिटल मार्केट क्या है और ये मनी मार्केट क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ा आपने, तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही आप जल्दी से फटाक से अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स उठा लीजिए, उसमें देखिए कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, मनी सप्लाई क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ा आपने कि आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है, फटाक से आप अपने नोट्स उठा लीजिए इकोनॉमिक्स के, उसमें देखिए कि आरबीआई की पावर क्या है, आरबीआई का एक्ट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी क्या है, कितने मेंबर्स हैं। ऐसे न्यूज़पेपर को इकोनॉमिक्स के साथ आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फिर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर, इन 3 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे स्वरूप ऑलरेडी बता चुके हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादा, मतलब 4-5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, दैट इज ट्रू। तो हमें ज्योग्राफी के साथ में ही इसी हफ्ते अगर आपको लगता है 3-4 दिन में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, तो आप एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर को भी पिक कर लीजिए, क्योंकि अगले नेक्स्ट 2 वीक्स उसी सब्जेक्ट के हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है 2018 या 19 में कि स्टबल बर्निंग की वजह से कौन सी गैसेस निकलती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, स्टबल बर्निंग इज अ इश्यू ऑफ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर? स्टबल बर्निंग तीनों का एक इश्यू है, एक इंटीग्रेटेड मैनर है। स्टेबल खेती की है, धान बना है तो उसका स्टेबल, उसकी हार्वेस्टिंग की है तो उसका स्टेबल रह गया है, उसको बर्न कर दिया है तो फिर उसकी गैसेस निकली हैं, तो एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्रीन हाउस गैसेज होंगे, पोल्यूशन होगा, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना आ जाएगा। फिर ज्योग्राफी क्या है उसकी, उसकी ज्योग्राफी ये है कि आप स्टेबल, ये दिसंबर में आते आते उसकी वो करते हैं, सॉरी नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इतना लेट क्यों करते हैं उसकी हार्वेस्टिंग, सितंबर या अक्टूबर में क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सीजन जो थी वो डिले कर दी गई। आप जब उसको पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि जो राइस की सीजन थी डिले कर दी गई, और डिले करते करते वो हार्वेस्टिंग नवंबर तक पहुंच गई। दिस इज हाउ आप हर टॉपिक के ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर को एक साथ पढ़ेंगे। और ये स्वरूप ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रीलिम्स में सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, प्रीलिम्स में 300 350 क्वेश्चन होते हैं। दैट मीन्स आपके हर क्वेश्चन में आपके 3-3 क्वेश्चन होते हैं, और इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा पढ़ा होंगे, आप जितना ज्यादा आपका कंटेंट रहेगा, जितना ज्यादा आपका नॉलेज रहेगा, नॉलेज बेस रहेगा, उतना जल्दी आप उस क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट की बजाय आप उसको पॉइंट कितना 45 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, और उससे टाइम बचेगा। टाइम बचने का फायदा यूं है कि जब लास्ट में आपको ट्रिक क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी होगी, तब आपके जो दिमाग और हैंड जो स्वेल कर जाते हैं ना लास्ट में, कम क्वेश्चन ज्यादा बचते हैं, समय कम होता है, तो वो स्वेलिंग नहीं होगी और आप घबराहट में नहीं जाएंगे। इससे टाइम बचाकर हमें चलना है। तो एक तो यूं था कि सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करके चलना है। अब फॉर एग्जांपल एक और ग्रुपिंग का एग्जांपल मैं बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आजकल क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, 4G 5G, वाईफाई आया और उसके बाद में लाईफाई आ गया, लाईफाई। फिर उसके बाद में अभी आ रहा है टावर कम्युनिकेशन था अभी, और अभी आ गया है डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो टावर्स धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होगा। फिर आप उसके बाद में देखिए 5G आ रहा है। तो जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़िए, उसको आप स्पेस के साथ पढ़िए। जब आप स्पेस पढ़ रहे हैं, स्पेस के डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट्स पढ़ रहे हैं, तो उसको उसके साथ पढ़िए। और एक है पार्टिकल फिजिक्स का टॉपिक, तो कम्युनिकेशन, स्पेस और पार्टिकल फिजिक्स, इनको एक साथ करके पढ़िए। पार्टिकल फिजिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं हर बार, और लाइक 2 to 3 क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़े से कन्वेंशनल से हटकर होता है। सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट होता जा रहा है, कन्वेंशनल से हटकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
पार्टिकल फिजिक्स में अब सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं रह गए जो हम अपनी 9वीं 10वीं में पढ़ते थे। 3 एटॉमिक पार्टिकल होते थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कशन यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्या आप ग्रुपिंग बनाएंगे सब्जेक्ट्स की और एक साथ पढ़ेंगे तो आपके जो है आपके दिमाग के डायमेंशंस खोले, आपका दिमाग डायमेंशंस खोलेगा हर सब्जेक्ट को लेकर, आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए टोटल मिलाकर ये है कि आप सबसे पहले अपना कंटेंट डेवलप कीजिए, नॉलेज बेस, फिर आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद में अगर कंटेंट अच्छा होगा, नॉलेज बेस अच्छा होगा तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इजीली अराउंड 120 स्कोर कर सकते हैं। और फिर आपको अगर कहीं पर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उसमें स्मार्ट टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा कर उसमें 5-7 क्वेश्चन वहां से सोल्व कर लेंगे, देन यू कैन इजीली रीच 120 मार्क्स, नो इश्यू। और उसमें कंटेंट में जो है आप बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट में आप यही 3 काम करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और तीसरा करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे। और उससे आपके फैक्चुअल चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, स्टैटिक चीजें भी, करंट अफेयर सब उसमें क्लियर हो जाएगी। सो मेनली मैं यही बताना चाह रहा था। और यू कैन कॉल मी एनी टाइम अबाउट एनी ऑफ योर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड अदर देन प्रीलिम्स आल्सो। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू। इस बीच में मेरे ख्याल से 2 और स्टूडेंट्स हमारे उसमें जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी लोग अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें तो सब लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। वन इज दीपिका। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दीपिका, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Deepika, am I audible to you? There might be problem. There is one more member that is written HY. I will ask, please introduce yourself. अगर आपके टीचर्स या मेंटर्स आपको जान नहीं रहे हैं, आप अपने टीचर्स और मेंटर्स को जान नहीं रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा हम लोगों को कोई इफेक्टिव क्लास कंडक्ट करना। सो नेक्स्ट टाइम मैं आप सबको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट्स का उसका वीडियो ऑन नहीं है तो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, राइट? क्योंकि बिना वीडियो के मुझे नहीं लगता है कि क्लास हम कंडक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो दूसरा, किसी को भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग इस आपका प्रिपरेशन में, तो आप जरूर कांटेक्ट करें। आप दीपक से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, राइट? उसमें तीनों मेंटर्स आपके रहेंगे, तो उसमें भी क्वेरीज डाल सकते हैं। पर्सनली आप क्वेरी डाल सकते हैं, आप फोन पर बात कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि हम में से किसी को कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए अगर हम कोई चीज किसी से डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट? दूसरा एक इशू अनसॉल्व है, वो है टेस्ट का, हमें कब आप लोग देना चाह रहे हैं। तो आप लोग जैसे एक हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया कि अगर ये वीकेंड में रहेगा तो ठीक है, किसी का और कोई प्रॉब्लम हो और कोई क्वेरी हो टेस्ट की टाइमिंग को लेकर तो हमें कन्वे कर दें, ताकि अकॉर्डिंगली हम लोग आपके टेस्ट को शेड्यूल कर सकें, राइट? सर 15 को नेट का एग्जाम है, तो उसके बाद हम टेस्ट दे पाएंगे? नहीं, यू कैन स्किप, दैट इज नॉट इशू। बट हम लोग क्या है कि हमारा जो शेड्यूल है हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे, राइट? If you have any problem, any exam, you can skip that test, that is no issue. बट हम लोग का वही जो शेड्यूल हमने दिया है कि किस किस वीक में क्या क्या सब्जेक्ट कवर होगा, हम लोग उसको स्टिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हमें पूरा कंप्लीट करना है, राइट? एनी अदर प्रॉब्लम?
और एक चीज ऐड करनी थी मुझे यस रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, जो किसी ने पीडीएफ की डिमांड की थी, जो जो हमें अवेलेबल होगा वो तो हम प्रोवाइड ही करेंगे। और भी जो ग्रुप के मेंबर है उनके पास अगर कोई पीडीएफ होगा तो वो भी ग्रुप पर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा सभी के लिए, क्योंकि वो सर्चिंग में टाइम कम वेस्ट होगा दूसरे कैंडिडेट्स का। सो कलेक्टिवली हेल्प होगा हर एक को। मैं भी कोई मैपिंग का हो, कोई करंट का हो, वो ग्रुप पे अपडेट करता रहूंगा। जैसे मुझे लगा अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये था, इस पे ये अगले बार पूछा जा सकता है, तो मैं वो सेंड करूंगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरा इस क्वेश्चन के बारे में ये एनालिसिस है और नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो वो भी शेयर कर सकते हैं वो कंसेप्ट। तो दिस कैनॉट बी वन यूनिडायरेक्शनल, इट कैन बी मल्टी डायरेक्शनल एक्सरसाइज। सो वो ग्रुप का पर्पज ये है कि अपना बेस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं आप ग्रुप पे, तो उसका कोई आप हेजिटेट मत करिए उसके लिए। तो आप शेयर करें ग्रुप पर, अगर आपको लगता है ये मटेरियल अच्छा है तो आप शेयर कर सकते हैं। Any question from anybody? और आप ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछिए, क्योंकि बाकी क्लासेस में और इधर डिफरेंस क्या है, उधर इंडिविजुअल कंसल्टेशन थोड़ी कम होती है, तो बच्चों को इंडिविजुअल फीडबैक कम मिलता है। इधर आपको हम चारों लोग 24/7 अवेलेबल है। आप कभी भी हमें टेक्स्ट करिए ये किसी के भी बारे में, कोई कंसेप्ट के बारे में, तो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं उस पे। तो डाउट क्लियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्शनलेस हो जाता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टडी का डायरेक्शन हम लूज करने लगते हैं। तो टू हैव फोकस स्टडी आप डाउट्स पूछते रहिए। जितने ज्यादा डाउट्स आप पूछेंगे उतना ज्यादा हम लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। तो सर अभी जो स्वरूप ज्योग्राफी की क्लास लेने वाले हैं, तो वो शुरू कर देते हैं, और बाकी अगर कुछ डाउट्स होंगे तो ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास कर सकते हैं। Pardon, Deepak, I am not getting you. हेलो। हाँ, क्या कह रहे हैं दीपक? हाँ सर, मैं कह रहा था अभी आज ज्योग्राफी की क्लास है, आज का सेशन जो। नहीं, दैट इज इंक्लूडेड। ये जो डिस्कस कर रहे थे स्वरूप, दैट इज डूइंग दैट ओनली, आई सपोज। स्वरूप, am I right? सर अगर आप और कुछ आपका वो है तो दैट यू कैन डू, या फिर अभी क्लास कंप्लीट हो गया? स्वरूप, और आपको क्लास इसके बारे में एक्सटेंड करना है, कुछ और बोलना है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करें? नहीं सर, अगर किसी का इंडिविजुअल डाउट रहेगा ज्योग्राफी के बारे में, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा तो अभी हो गया है, लेकिन अब अगर किसी का डाउट रहेगा, राइट, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लोग पढ़ के आएंगे 1 वीक दीपक, और फिर जो पढ़ेंगे उसके ऊपर फिर ये स्वरूप डिस्कस करेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास में, कि किसने क्या पढ़ा है, क्या नोट्स बनाया है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर डाउट है। देन उस पूरे एरिया में स्वरूप उसको इंटेंसिवली डिस्कस करेंगे। ये मैं राइट स्वरूप? यस सर, नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन होगा इसका। कुछ पढ़े बिना डिस्कशन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, अगर पढ़ने के बाद डिस्कशन हो तो थोड़ा वो फ्रूटफुल रहता है। राइट। ओके सर, देन इट्स फाइन। So should we wind up the class? Sir, one doubt, sir. Excuse me. Yes. Sir, according to you, which subject is difficult, sir? Yes. Am I audible? Yes, you are very much audible. I will request first you to first introduce yourself and then ask your question. Well, I am Deepika Purnata. I am from Andhra Pradesh.
So may I know which subject is tough in UPSC as according to you, sir? The question is it. किसको आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? Amresh Kumar, sir. हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, क्या पूछ रही हैं आप? According to you, which subject is tough, sir, in UPSC CSE? From point of view, prelims point of view. Not only prelims, mains as well, sir. Deepak, Dr. Deepak, am I audible? Sir, I would like to add some comments on this question. Yes. This is true. Yes. See, Deepika, as such, there is no question subject is difficult or easy in UPSC. It entirely depends on what background you are having, on which subject you have done your graduation. For example, students from science background feel easy to solve the questions from science and tech, but they are getting difficult for solving questions from history, polity. They are able to solve questions from economics, geography, science and tech easily, but it is difficult to solve questions from easily for them. The student from arts background may be feeling different. The student from other background can have different difficulty. So there is no rigid classification about the kind of questions or difficulty. Okay. May I add polity, sir? What about polity? Regarding polity, if you are done with your basics, if you have read the Lakshmikant multiple times, you are good with your basics of polity, basic concept regarding rights, regarding federalism, regarding other things, then it is easy to tackle two questions from polity. It is a bit difficult to tackle questions from history for me. Any other person may have different point of view, because the history questions are mostly factual, especially ancient medieval. So polity questions are fairly easy. The difficulty is in history questions. So that's what I said earlier. Every person may have different strong point, different weak points. So this will vary from person to person. There is no such rigid classification. So if you need any assistance in polity question or polity sections, we can help you in that. If you are feeling so, we always are there to help you. Okay. Thank you. Okay. Then should we close the class for today? We will meet every Sunday at 5 PM sharp. Right? मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि हमें कोई चीज़ रिपीट ना करना पड़े। और इस क्लास का वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपको सबमिट कर दूंगा, ताकि हो सकता है किसी का छूट गया होगा किसी स्टूडेंट्स का, दे कैन अगेन गो थ्रू द वीडियो एंड गेट क्लियर, राइट? ओके। जब मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन सर्वेश? जी सर, एक क्वेश्चन था। मैं सर 2032 तक एलिजिबल हूँ, मतलब तो मुझे इस बार भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। सर आप कमेंट रहेगा? यस सर्वेश मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप तैयारी करने की सोचते हैं तो कोई आपकी तैयारी होती नहीं है, समझ रहे हैं? जिस दिन आप सोच लेते हैं कि आज से मैं तैयारी करूंगा और मैं ये जो 3-4 महीने हैं मैं इसमें कर सकता हूं, जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं 3-4 महीने में कर लूंगा, वही दिन आपका पहला दिन होगा अपने टारगेट की डायरेक्शन में बढ़ने का। नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे तो आपको लगेगा नहीं मेरी तैयारी अभी नहीं, मेरे पास टाइम बहुत है। टाइम मैटर नहीं करता है, जिस दिन से आप शुरू कर लेंगे वही दिन होता है, राइट? ये जो पोस्टपोन करने का एक हमारे अंदर हैबिट होता है,
एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ इसी तैयारी के लिए नहीं, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सही पॉलिसी नहीं है। ओके सर। राइट? ओके, थैंक यू सर। Okay then, thanks everybody. Thank you all. Thank you. Sure. Thank you, sir.